Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari and Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Banachari Yamunatira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srimad Bhagavatam ki jai Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki jai Shri Radha Govinda ki jai Shri Panchatattva ki jai ISKCON Faridabad ki jai. Very beautiful place. You have to speak loud. Can I say something before we Yeah. If you Hindi translation side by side because Yeah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So after accruing pieties over millions of lifetimes, one gets a wonderful opportunity to hear and take association and take darshan of exalted Vaishnavas, divine personalities. And we're all very fortunate that today we have with us for the first time in the history of ISKCON Faridabad, His Holiness Kavichandra Swami Maharaj. So Maharaj is a very senior disciple of Srila Prabhupada. He got connected with ISKCON in 1967. He took initiation from Srila Prabhupada. And then Maharaj was a very prominent book distributor. Maharaj got connected in Tucson, the city called Tucson in Arizona. And he was a very prominent book distributor, and he was distributing books in libraries and different places. And then he was leading, you have all heard of, किसने Radha Damodar party का नाम सुना है? Radha Damodar party. So Maharaj was leading one of the Radha Damodar parties. And then Maharaj has been traveling now worldwide. And in early 1980s, Maharaj took sannyas. He is traveling worldwide. तो महाराज का बहुत अधिक स्वागत करते हैं. महाराज 1967 में ISKCON संस्था से जुड़े, प्रभुपाद जी से दीक्षा प्राप्त की, राधा दामोदर पार्टी को लीड करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं. जापान में मंदिर खोला, जापान में महाराज टेम्पल प्रेसिडेंट रहे. और अभी जो सबसे कठिन देश हैं, जापान, थाईलैंड, वेस्ट अफ्रीका, उन सब कंट्रीज़ में महाराज प्रचार करते हैं और वहाँ के लोगों को भी हरिनाम पहुँचा रहे हैं.
और हम लोग पहले नवद्वीप परिक्रमा में जाते थे. जब भी जाएंगे नवद्वीप परिक्रमा में महाराज वहाँ मिलेंगे. इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट personality who is always present in Navdeep Mandal Parikrama. So we are fortunate and blessed to have your divine association, Maharaj. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj Ji ki, Srila Prabhupada ki jai, Samit Gaur Bhaktavind ki jai. तो हम आज भागवतम का 4th कैंटो 9th चैप्टर 37 अपने मोबाइल्स पे निकाल सकते हैं. 4:9:37. Very convenient now, everybody. We used to have to write it out on a board, and Prabhupada was very angry when they didn't have one. You know, if everybody couldn't see it. But now, I guess you can find it easy. तो पहले के ज़माने में तो बोर्ड पे लिखा करते थे और प्रभुपाद बहुत क्रोधित होते थे जब बोर्ड पे नहीं लिखा होता था, परंतु अब तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ निकाल सकते हैं. Akarnyatma jam ayantam samparecha yatagatam raja na shadade badram abhadrasya kutomama akarnyatma jam ayantam samparecha yatagatam rajana shadaye padram atadrasya kutomata akarnyatma jam ayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomama akaryatvam ayayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomana akarnyatma jamayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomama akarnyatma jam ayantam samparecha yatagatam raja abhadrasya kutomama akarnyatma jam ayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomama melodies. Akarnyatma jamayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomama akarnyatma jamayantam samparecha yatagatam rajana shadade badram abhadrasya kutomama akarnyatma amyatam samparecha yatagatam rajana shadade badram
𝒍𝒂𝒚𝒔 Akarnya, having heard, Atmajam, his son, अपना पुत्र, Ayantam, coming back, आते हुए, Samparecha, after dying, मरने के बाद, Yata, as if, जिस प्रकार Agatam, coming back, वापस आया हुआ, Raja, King Uttanapada, राजा उतानपाद, na, did not, नहीं, Shadade, have any confidence, विश्वास हुआ, Bhadram, good fortune, कल्याण, Abhadrasya, of the impious, अशुभ का, Kuta, whence, कहाँ से, Mama, my. मेरा. When King Uttanapad heard that his son Dhruva was coming back home, as if coming back to life after death, he could not put his faith in this message, for he was doubtful of how it could happen. He considered himself the most wretched, and therefore he thought it was not possible for him to attain such good fortune. अनुवाद इस प्रकार है, जब राजा उतानपाद ने सुना कि उसका पुत्र ध्रुव घर वापस आ रहा है, मानो मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवित होकर आ रहा हो, तो उसे इस समाचार पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसे संदेह था कि यह हो कैसे सकता है. उसने अपने आप को अत्यंत अभागा समझ लिया था, अतः उसने सोचा कि ऐसा सौभाग्य उसे कहाँ प्राप्त हो सकता है. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dhruva Maharaj, a 5-year-old boy, went to the forest for penance and austerity, and the king could not believe that a small boy of such a tender age could live in the forest. He was certain that Dhruva was dead. Therefore, he could not fix his faith in the message that Dhruva Maharaj was coming back home again. For him, this message said that a dead man was coming back home, so he could not believe it. After Dhruva Maharaj's departure from home, King Uttanapad thought that he was the cause of Dhruva's leaving. And thus he considered himself the most wretched. Therefore, even though it was possible that his lost son was coming back from the kingdom of death, he thought that since he was most sinful, it was not possible for him to be so fortunate as to get back his lost son. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा 5 वर्ष के बालक ध्रुव महाराज तपस्या तथा आत्म संयम के लिए जंगल चले गए, और राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अल्प आयु का बालक जंगल में रह सकता है. उसे पक्का विश्वास था कि ध्रुव मर चुका है, अतः उसे इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ध्रुव महाराज घर वापस आ रहे हैं. उसके लिए यह समाचार मानो यह कह रहा हो कि एक मृत व्यक्ति वापस आ रहा है, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था. ध्रुव महाराज के जंगल चले जाने के बाद राजा उतानपाद सोचता रहा कि उसी के कारण ध्रुव महाराज जंगल चले गए हैं, अतः वह अपने आप को सबसे दुर्भाग्यशाली समझ रहा था. अतः भले ही उसका खोया हुआ पुत्र मृत्यु के राज्य से वापस आ रहा था, किंतु अपने आप को अत्यंत पापी समझ लेने के कारण वह सोच रहा था कि उसके इतने भाग्य कहाँ कि खोया पुत्र वापस आ जाए. Om Jnana Timirandasya Janangana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve
Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarane Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Madhur Jojvala Premaja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varshavanavi Devi Dayitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shrimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane Namo Gaurakishwaraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Virbhave Bhumes Tvam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannataya Te Namaha Hanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhani Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrindaki Shri Radha Krishna Gopinath Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, thank you for having me. बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे यहाँ आने का अवसर मिला. Chance to speak Srimad Bhagavatam is something we should all anchor after. तो हम सबको प्रोत्साहित होना चाहिए हम भागवतम के बारे में कुछ बोल सकें. We have to read Srimad Bhagavatam and then automatically you'll speak it to somebody. हमें भागवतम को पढ़ना चाहिए और फिर जब भी अवसर मिले उसके बारे में बोलना चाहिए. Does everybody चाहिए. have the Srimad Bhagavatam set now in their home? क्या आप में से सबके पास घर में भागवतम सेट है? हाथ खड़ा कर सकते हैं जिनके पास है. Anybody not have it? कोई ऐसे हैं जिनके पास भागवतम सेट नहीं है घर पे? Get one today. The price is still very low, you know. They were talking about raising the price. It's still only 9,000, right? तो अभी तो कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है भागवतम की, शायद प्राइस बढ़ जाएगा बाद में. At least in Mayapur. In Mayapur it's still 9,000. मायापुर में 9,000 रुपए का भागवतम सेट है. So when Devananda Pandit, a few days ago we were at his mutt. तो हम कुछ दिन पहले देवानंद पंडित का जो मठ है वहाँ पे थे कुछ दिन पहले. Devananda Gaudiya Mutt. देवानंद गौड़िया मठ में. Devananda was a big scholar, a so-called scholar of Bhagavatam, but he was not a devotee. तो देवानंद पंडित एक संस्कृत स्कॉलर थे पर भक्त नहीं थे. And his disciples were offended Srivas Thakur. और देवानंद पंडित के जो शिष्य हैं उन्होंने श्रीवास ठाकुर को के प्रति अपराध किया. Because when he heard the Bhagavatam, he just went into ecstasy and he was crying, and they thought this is disturbance. क्योंकि जब श्रीवास पंडित ने भागवतम सुना तो वो भाव में आ गए और रोमांचित हो उठे और क्रंदन करने लगे.
And this Devananda who was speaking, he didn't stop them. और जो देवानंद पंडित जो कि उस टाइम भागवत कथा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो शिष्य हैं वो रोक रहे हैं, तो रोका नहीं उनको. So when Lord Chaitanya was passing by his school, he stopped and he just shouted, "You are a fool, you're a cheater, you don't know anything, and you're speaking Bhagavatam, you don't understand one word of it." तो क्योंकि देवानंद पंडित के शिष्य श्रीवास ठाकुर को बाहर फेंक रहे थे और देवानंद पंडित ने रोका नहीं, तो जब चैतन्य महाप्रभु को दिखे तो बोला देवानंद पंडित को, तुम मूर्ख हो, तुम भागवतम के बारे में बोलते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता. Lord Chaitanya was right in public shouting like that. तो चैतन्य महाप्रभु सार्वजनिक रूप से सबके सामने उसको देवानंद पंडित को डांट रहे थे. But then this Devananda, he went to some program and he saw Vakashar Pandit dancing for 4 or 6 hours or something. पर एक बार की बात है कि देवानंद पंडित किसी प्रोग्राम में गए थे और फिर वहाँ पर वक्रेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे. And he got very impressed by that. और देवानंद पंडित को बहुत अच्छा लगा ये वक्रेश्वर पंडित का बहुत सुंदर नृत्य. And he started, serving Vakashar Pandit. और वहाँ पर इतना प्रभावित हुए कि वक्रेश्वर पंडित की सेवा कर. He was so much attracted to that ecstatic dancing. वक्रेश्वर पंडित के इतने रोमांचित होकर नृत्य करने से इतना आकर्षित हुए थे देवानंद पंडित कि उनकी सेवा करने लगे. Dancing is very important. तो नृत्य करना बहुत महत्वपूर्ण है. Krishnot Kirtana Gananatana Para. The Goswamis were always chanting and dancing. जो षट गोस्वामी सदैव हरिनाम कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे. And Prabhupada's dancing inspired everybody, the whole world. और प्रभुपाद जी के नृत्य करने ने पूरे विश्व को इंस्पायर किया. Dancing produces bhakti, Prabhupada. तो नृत्य करने से भक्ति आती है. So he started just, associating with Vakashar Pandit, and when he was dancing, he would stay behind him, so if he fell, he would catch him, and he'd fall backwards in ecstasy. And if he fell on the ground, he would be wiping the sweat, and he obviously must have been hearing him speak Srimad Bhagavatam. और हम जो देवानंद पंडित इतने प्रभावित हुए कि वक्रेश्वर पंडित के नृत्य से कि उनके आसपास ही रहे कि वक्रेश्वर पंडित जब नृत्य कर रहे हैं, मान लीजिए पीछे गिरने लगे हैं बाकी लोग हैं, तो अपने हाथ का सहारा देते थे देवानंद पंडित. वक्रेश्वर पंडित जब जमीन पर गिर जाते थे, उनका आंसू निकल रहे हैं, तो देवानंद पंडित उनका आंसू पोंछते थे. तो इस तरह बहुत प्रभावित थे और सुनना चाहते थे वक्रेश्वर पंडित से भागवतम. Somehow he met Lord Chaitanya. और किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई. And he asked him, "What is the Srimad Bhagavatam about anyway?" और फिर महाप्रभु से पूछा कि भागवतम किसके बारे में है. Even though he's the big famous teacher of Srimad Bhagavatam. हालांकि देवानंद पंडित बहुत ही प्रसिद्ध वक्ता थे भागवतम के, परंतु महाप्रभु से पूछते हैं कि किसके बारे में भागवतम. Still many of those around, right? There's many of those types around. तो अभी भी आज के ज़माने में काफ़ी ऐसे बड़े-बड़े तथाकथित कथावाचक हैं. Bhagavatam reciters who charge huge fees to recite Bhagavatam. भागवतम की कथा करते हैं बड़ी-बड़ी. But they're not devotees exactly. परंतु भक्त नहीं है भगवान के. So Lord Chaitanya said it's about bhakti, only bhakti, nothing else. तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भागवतम में भक्ति है और भक्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं है. And that anyone who has Srimad Bhagavatam in their house, nothing inauspicious will ever happen in that house. जिसके पास भी घर में श्रीमद् भागवतम है, उनके घर में कभी भी कुछ अशुभ घटना नहीं होगी. So he was saying, and what can I do, because he realized Lord Chaitanya was not happy with him. तो देवानंद पंडित क्योंकि इस बात को समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रसन्न नहीं हैं, तो पूछने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए. He said, "Well, you've offended Srivas, so I can't help you." तो फिर महाप्रभु ने बोला कि तुमने श्रीवास के चरणों में अपराध किया है, तो मैं उसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता. You have to go to Srivas. तो श्रीवास के चरणों में अपराध किया है तो श्रीवास के पास ही जाना होगा. So he did, and Srivas, of course, was not feeling offended and immediately forgave him. तो देवानंद पंडित श्रीवास ठाकुर के पास गए क्षमा मांगने के लिए, परंतु श्रीवास को ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे प्रति अपराध हुआ है, तो बहुत तत्क्षण उन्होंने उनको क्षमा कर दिया. And then he suddenly changed, and he had all this knowledge of the Bhagavatam, but he started to explain it properly.
और फिर एकदम से बदलाव आ गया देवनारायण पंडित में, और अब जब भागवत कथा करते थे तो बिल्कुल भक्ति भाव से करते थे। Krishna is the supreme magician, so he can hide. Some people, they know the Bhagavad Gita, they know it backward and forward, and they know every word, but they don't see Krishna. तो कृष्ण सबसे बड़े जादूगर हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं भगवत गीता को आगे से उठाएं पीछे से उठाएं, एक एक शब्द उसका जानते हैं, उनको याद है, परंतु कृष्ण के बारे में नहीं जानते। But like that South Indian Brahmin, he could hardly read, but he knew that Krishna was driving Arjuna's chariot and that Krishna is the Supreme Lord, and just because of that he was feeling complete ecstasy, impressed Lord Chaitanya with his love for Krishna. जिस तरह वो दक्षिण भारत का अशिक्षित ब्राह्मण था जिसने भगवत गीता में चित्र देखा कृष्ण और अर्जुन का, और इतना रोमांचित हुआ चित्र को देखकर कि जो हमारे स्वामी कृष्ण हैं वो वाहन चालक बने हुए हैं अर्जुन के, तो बहुत भाव आ गए और इसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को प्रभावित किया उसने। The Bhagavatam is not understood by, by scholarship or any of those things. It's by the mercy of the Lord. तो जो भागवतम समझने के लिए पांडित्य की आवश्यकता नहीं है, बड़ा पंडित होने से नहीं समझ पाएंगे, भगवान की बहुत कृपा चाहिए भागवतम समझ पाने के लिए। So if you have it in your house, it's wonderful. If you read it, of course, it's much more wonderful. तो यदि आपके घर में भागवतम सेट है तो बहुत अद्भुत है, और यदि आप उसको पढ़ते भी हैं तो और अधिक अद्भुत है। Sometimes when we try to distribute the books, people say, well, I don't read. That's okay. Even if you don't read it, it's good. It has power. तो कई बार भक्त ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं ग्रंथों का वितरण करता हूँ, पढ़ तो नहीं रहा पर कोई बात नहीं, वितरण तो करता ही हूँ। But you definitely will not read it if you don't have it. परंतु हाँ ये है कि यदि आपके पास है नहीं तो आप तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। It's a beautiful thing to have in your house. तो बहुत सुंदर है भागवतम का घर में होना। I don't know, in India, in modern houses, they usually make a big, beautiful shelf for the television, speakers of the television and everything. So some people put the Bhagavatam there. तो भारत के जो आधुनिक बड़े बड़े घर हैं उसमें बहुत बड़ा एक कैबिनेट होगा, उसमें टेलीविज़न सेट होगा, उसके आसपास बड़े बड़े स्पीकर होंगे, तो कुछ लोग अब तो वहाँ पर भागवतम सेट को रखते हैं। So of course we can get it here also, but it's good to have the books. हाँ मोबाइल में भी लग सकते हैं भागवतम, परंतु अच्छा है कि ग्रंथ हमारे सामने हो। But however you read it is good. परंतु जो भी हो जैसे भी हो उसको पढ़ें वो बहुत अच्छा है। So Lord Chaitanya, along with Gadadhar Pandit, he would read Bhagavatam every day for 3 hours. तो हर रोज चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ 3 घंटे भागवतम का अध्ययन करते थे। And he especially they would read everything, but especially they would read Dhruva and Prahlad. तो हालांकि महाप्रभु सब कुछ over and over and over again. सब कुछ पढ़ते थे, परंतु विशेष रूप से ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा बार 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 पढ़ते थे। Lord Chaitanya especially liked Dhruva. चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से ध्रुव महाराज का बहुत चरित्र बहुत पसंद था। So this story is very wonderful. तो ये जो कथा है ध्रुव महाराज की बहुत ही विशेष है। We cannot imitate Dhruva and stand on one leg or eat only. Even the first month he couldn't do that even. Right? Well, the first month he ate leaves only that fell from the trees. तो हम ध्रुव की नकल नहीं कर सकते कि हम एक पैर पे खड़े हो जाएं, और जो इतनी अद्भुत तपस्या है कि केवल पहले महीने की तपस्या की वो पत्तियां खाते थे, हम वो नहीं खा सकते। 1 month he ate some kind of berry that usually only monkeys eat, that humans don't eat. या पहले महीने में ध्रुव महाराज वो फल खाते थे जो केवल बंदर खाते हैं। Then he was only water, then only air, then he stopped even breathing. फिर केवल पत्ते, फिर केवल पानी, फिर उन्होंने सांस भी रोक लिया। But we can follow the footsteps, that he was strictly following the order of his spiritual master.
तो हम ध्रुव की नकल तो नहीं कर सकते, पर इस बात को, इस भाव को हम पालन कर सकते हैं कि ध्रुव अपने गुरु की आज्ञा का दृढ़ता से पालन कर रहे थे। He knew what he wanted. He wanted to meet God. ध्रुव को पता था कि उनको क्या चाहिए, वो भगवान को मिलना चाहते थे। His original motivation was very material, very, he wanted his huge kingdom, wanted to knock out his stepmother, तो उनका जो आरंभ का surpass प्रेरणा, his father and everything. उनकी जो आरंभ में प्रेरणा थी भगवान से मिलने की, वो इसलिए कि बहुत बड़ा राज्य चाहिए और अपनी सौतेली माता है उसको घूसा मार के नीचे गिरा दूं, इस तरह की उनकी भावनाएं थी। But he got absorbed in what Narada Muni had told him to do, and chanting the mantra, and he was doing puja, and he was all this other tapasya he did. That was somehow or other came from, we don't know, where he got such a pissed life or something. He never learned anything like that. परंतु जो भी है वो उनकी गुरु की आज्ञा थी नारद मुनि की, तो पूर्ण रूपेण गुरु की आज्ञा के अनुसार मंत्र का जप करने लगे, भगवान की आराधना करने लगे, और जैसे भी हो उन्होंने कहीं सीखा तो नहीं था, पर भगवान ने प्रेरणा दी, तपस्याएं करने लगे अलग अलग तरीके की। But he was chanting, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, and he forgot all this other, original what he wanted. He got absorbed. परंतु गुरु की आज्ञा से वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका निरंतर जप कर रहे थे, और जप में इतना लीन हो गए कि जो उनकी आरंभिक इच्छा थी बड़े राज्य की प्राप्त करने की, वो भूल गए। So his father, who had been totally bewildered by lust, तो उनके पिता उतानपाद जो कि काम वासना से बिल्कुल घायल थे, we went to the house of Dhruva in Kanpur. तो हम कानपुर में ध्रुव के घर पे गए, And where Dhruva and his mother lived was far away from the palace. तो जो ध्रुव की माता का घर है वो राजमहल से बहुत दूर है। Welcome. They were far away from the palace and where the father lived and everything. तो उतानपाद का जो राजमहल था उससे काफी दूर था ध्रुव की माता का घर। But he wanted, and he thought, I'll show them, I'll get this bigger kingdom. परंतु जो भी है ध्रुव की इच्छा थी कि मैं इनको दिखाऊंगा, मैं बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा इनको। But like I said, he got absorbed. He was following the order of the spiritual masters, so we can do that. परंतु जो भी हो अपने गुरु की आज्ञा से वो मंत्र के जप में पूर्ण रूप से रम गए, और हम भी ये कर सकते हैं। 4 regulative principles, 4 नियमों का पालन, 16 rounds every day, 16 माला का हर रोज ध्यानपूर्वक जप करना, and rising early, taking bath, and प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान chanting the करना, holy name, hearing और the Bhagavatam. Then we can add on whatever austerity. You can do some kind of service. You can whatever you want to do. तो प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान Always करना, those things have to be there. हरि नाम का जप करना, भागवतम अध्ययन करना, और फिर कुछ तपस्याएं जैसे कुछ न कुछ सेवाएं हम लोग ले सकते हैं। So his father was totally bewildered by this attraction for the young wife. तो जो ध्रुव के पिता हैं वो अपनी युवती पत्नी है उसके आकर्षण में बिल्कुल पागल से हो गए थे। So when she was so nasty, and he liked Dhruva as his son, but when she chased Dhruva away, he tolerated. तो हालांकि उतानपाद को अपना पुत्र ध्रुव अच्छा लगता था, परंतु युवा पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे कि जब उसने उनको ध्रुव को डांटा तो उसने कुछ मना नहीं किया। He didn't want to chastise his wife for fear she might hold back his sense gratification. Sometimes wives do that. They tell the husband, if you do this, I won't give you. तो वो इसलिए घबरा गए कि यदि मैं अपनी जो दूसरी पत्नी है इसकी, हालांकि इसने मेरे पुत्र को डांटा, इसको रोकूंगा तो ये मेरी काम इच्छाओं को पूरा नहीं करेगी। He was too much attached. तो बहुत आसक्त थे वो अपनी दूसरी पत्नी से। But then when he found out Dhruva had just left in the night and nobody knew where he went, परंतु जब बाद में पता चला कि रात को उनका बेटा घर छोड़ के चला गया और किसी को नहीं पता कहाँ गया है वो, except forest, वो वन में चला गया है। and then there was really forest, not like now. Now you go to, he went to Mathura,
Now they call it a forest, but there's no trees or wild animals or anything. तो मथुरा में गए थे वो ध्रुव महाराज, उसको अभी भी है परंतु वन बोलते हैं, परंतु आजकल तो पेड़ मिलते नहीं वहाँ पर. It's just if you're on the road, you have to watch out for tractors and motorcycles and stuff. But it's not so dangerous. But then the forest was really a forest with full of wild animals and snakes. And अभी भी जाएंगे मथुरा में तो सड़कों पर जाएंगे, खतरा है क्योंकि सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, परंतु उतना खतरा नहीं है. पहले बहुत खतरनाक था, जंगल थे, पशु थे. And from Kanpur to Mathura is very far. और कानपुर से मथुरा काफी दूर है. 5-year-old boy by himself. 5 साल का बालक अपने आप पहुंच गया वहाँ. So the father realized, oh my God, my son is dead. He couldn't possibly survive. तो फिर उतानपाद को लगा कि ओ भगवान, मुझे लगता है मेरा बेटा मर गया, क्योंकि संभव ही नहीं है कि 5 साल का बालक इतना दूर गया है, कैसे जीवित रहेगा. Then he just became depressed and, feeling like a big, terrible person. फिर वो व्याकुल हो गया, डिप्रेशन में आ गया कि मेरा पुत्र मर गया है. Then Narada Muni came after some time and told him Dhruva is fine. He's coming back. और कुछ समय के बाद नारद मुनि आए और 6 months. 6 महीने के बाद नारद मुनि आए और उतानपाद को बताया कि तुम्हारा पुत्र. He couldn't really believe that he could come back because he was convinced all the time that he's dead. तो सदैव उतानपाद ने यही सोचा कि बेटा मर चुका है, परंतु नारद मुनि ने आके बताया कि तुम्हारा पुत्र जीवित है और अभी वापस आ रहा है. But Dhruva was protected by Lakshmi and he was protected by, Narada Muni. परंतु ध्रुव की भगवान ने रक्षा की और नारद मुनि ने रक्षा की. Because he was fixed on worshipping the Lord, so therefore the wild animals and all, they don't bother this people. क्योंकि वो पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों को समर्पित था, एकाग्रचित था, तो इसलिए पशु भी उसका कुछ नहीं किए. So here he heard he's coming and Narada Muni should believe him, but still he can't believe it. तो यहाँ पर उतानपाद ने आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि सुना है कि उनका पुत्र वापस आ रहा है, नारद मुनि बता रहे हैं, परंतु फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा. But, he was dead, how could he come back? क्योंकि उतानपाद तो यही सोचता रहा कि मेरा बच्चा मर चुका है, अब वो कैसे वापस आ सकता है. But then we know he did come back. परंतु हम जानते हैं कि ध्रुव वास्तव में वापस आ गए. We have the Bhagavatam and many Puranas tell the Dhruva's Leelas also. तो भागवतम में और पुराणों में कई तरह की लीलाएं हैं. So someone might say, well, different people, they only read the Gopi Baba or something. तो कई बार लोग बोलते हैं या कहते हैं कि हम सिर्फ गोपियों के बारे में ही सुनेंगे या पढ़ेंगे भागवतम में से. But the Goswamis, Lord Chaitanya, Gadadhar, they read everything. परंतु जो षट गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित, वो तो सब कुछ पढ़ते थे भागवतम में. They didn't discriminate that one part is better than another part. वो भागवतम के अंदर भेद नहीं करते थे कि एक प्रसंग अच्छा है, एक प्रसंग बुरा है, ऐसा भेद नहीं करते थे. Because Krishna is there everywhere. क्योंकि कृष्ण तो हर जगह पे है भागवतम में. So if we read Bhagavatam and of course if we do make the effort to read it from the beginning all the way through, but Prabhupada said you can read anywhere you like, तो अच्छा है कि हम क्रमशः भागवतम को आरंभ से शुरू करें, अंत तक जाएं, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं जो भी हो कहीं से भी उठाएं और पढ़ें उसको. But if you read about Dhruva, you can try to remember that. Just imagine Gadadhar Pandit, Radharani, and Lord Chaitanya Radha. Well, in that mood he's Krishna. When he's with Gadadhar, he's in the mood of Krishna, and Gadadhar is Radharani. They're reading about Dhruva, they love it. परंतु ध्रुव महाराज की कथा इतनी अद्भुत है कि जरा सोच कर देखिए, गदाधर पंडित जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं के भाव में आए हैं, और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में आए हैं, और गदाधर पंडित जो स्वयं राधा रानी हैं, वो भी ध्रुव के बारे में बार बार चर्चा करते थे, श्रवण करते थे, पढ़ते थे. So we're very fortunate to read this. तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ध्रुव की कथा को पढ़ पा रहे हैं. But the point is, he's strictly following the order of the spiritual master. तो मुख्य इसमें शिक्षा ये है कि आध्यात्मिक गुरु की शिक्षा का दृढ़ता से पालन करना. He was a Kshatriya king, and by birth, and in such a yuga. So
We can't think, well, I have to do like he did in the forest. तो ध्रुव महाराज तो देखिए क्षत्रिय थे, क्षत्रिय खून था और सतयुग में थे, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ध्रुव ने किया वही हम करेंगे, ये संभव नहीं है आज के समय में। And Prabhupada never told us, you have to stand on one leg and stop breathing or something. तो प्रभुपाद जी ने कभी हमें नहीं बोला कि एक पैर पे खड़े हो जाओ और सांस लो। Follow the order of the spiritual master. परंतु मुख्य है कि आध्यात्मिक गुरु के आदेश का, आज्ञा का पालन करें। And by that you'll get benediction. और उसके माध्यम से भगवान का आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। All right, so we take, because we have 15 minutes to see if we have any questions or comments. तो हम कुछ समय देंगे कुछ प्रश्न के लिए या कोई कुछ समीक्षा करना चाहे। Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your divine association. We all are so blessed to have your association. Maharaj, I have two questions. You glorified Srimad Bhagavatam in your lecture. So how can I increase taste in reading Bhagavatam consistently? And second, Maharaj, can you please describe one most dear anecdote of Srila Prabhupada and His Holiness Tamal Krishna Maharaj so that we can also relish? What's the first question? Maharaj, first question is how can I develop taste in Srimad Bhagavatam and read it consistently, study it consistently? तो पहला प्रश्न ये है कि भागवतम को निरंतर रूप से कैसे अध्ययन कर सकूं? How can you what? Consistently read Bhagavatam and develop a taste for it. Just read it. अध्ययन करके, by practice. तो अभ्यास करके, it'll grow on you, It's like, it may be in the beginning bitter medicines for some people. Some of the statements are very strong. तो आरंभ में हो सकता है किसी को बहुत कड़वी दवाई की तरह लगे, परंतु फिर भी लगे रहें। But if we just keep reading, by that association, we'll naturally develop the taste. परंतु आरंभ में यदि उसका स्वाद नहीं भी आ रहा, कड़वा भी लग रहा है, परंतु फिर भी उसका अध्ययन करते रहें, तो क्रमशः वो स्वाद आ जाएगा। By regular hearing and chanting, Bhagavatam. नियमित रूप से भागवतम का श्रवण करना और उसका बारे में बोलना, we get naturally it will act. और फिर करते करते हमारे लिए भागवतम स्वाभाविक हो जाएगा उसका अध्ययन। That requires some faith, but उसके लिए everybody likes some part of the Bhagavatam. उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, परंतु हर किसी को भागवतम का कुछ न कुछ हिस्सा तो अच्छा लगता है। And the more we read it, the more it's revealed to us how unlimited it is. तो जितना हम भागवतम पढ़ेंगे उतना हम देखेंगे कि भागवतम उतना असीमित है। It's amazing poetry. बहुत ही अद्भुत कविता है, एक तरह से काव्य है भागवतम। Just for that's why I say some people just study the Sanskrit poetry and they don't understand it at all, but they just study the language and love it. Those are scholars. इतना अद्भुत काव्य है कि कुछ लोग तो जो बड़े बड़े पंडित हैं वो बस उसके कविता रूप में ही पढ़ते हैं, परंतु जो भी है अर्थ। Devotees, we like it to associate with devotees. We can associate with Dhruva, can associate with Narada Muni, associate with Lord Shiva. All these great personalities are there, and by reading Srimad Bhagavatam, we associate with them. तो बड़े बड़े पंडित तो पांडित्य के रूप में भागवतम के श्लोकों का कविता रूप में पढ़ते हैं, परंतु जो भक्त हैं वो जब भागवतम पढ़ते हैं तो नारद मुनि, शिव जी, ध्रुव महाराज, इनकी कथाओं को सुनकर उनका संग लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। Especially we can associate with Srila Prabhupada. और विशेष रूप से भागवतम अध्ययन के माध्यम से हम श्रीला प्रभुपाद का संग ले सकते हैं, by his purports. उनके अद्भुत तात्पर्यों के माध्यम से। That is a special mercy. तो ये एक बहुत विशेषता है श्रीमद् भागवतम में। Sukadev heard it from Vyas. He studied other places also. तो शुकदेव ने व्यास से श्रवण किया। And it said when Sukadev spoke, it became better. परंतु जब शुकदेव ने बोला तो और अच्छा हो गया। And then throughout the
centuries, we have commentaries by so many acharyas. और फिर इन सैकड़ों वर्षों में अलग अलग आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं भागवतम के ऊपर. So in the same way, it keeps getting better. तो इस तरह जितनी बार पढ़ा जाए उतना रसमय होता जाता है. And finally, we have Srila Prabhupada's purports, which are especially better for us. और विशेष रूप से जब प्रभुपाद जी ने आखिरकार अपने तात्पर्य दिए तो बहुत अद्भुत हो गया भागवतम. Somehow, Prabhupada, his writing and his English language is inconceivable. तो ये अचिंत्य है कि श्रील प्रभुपाद ने कैसे इतना अद्भुत रूप से इसका लेखन किया. Normally, there's books for scholars, there's books for children, there's books for different people, right? साधारणतः जो ग्रंथ कुछ जो किताबें होती हैं कुछ स्कॉलर्स के लिए होती हैं कुछ बच्चों के लिए होती हैं इस तरह होता है. Prabhupada's books, children can read them. प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो बच्चे पढ़ Many सकते हैं. children read, even 12 years old, even younger sometimes. कई 12 साल के उससे They छोटे like बच्चे भी it. पढ़ते हैं प्रभु की बुक्स. And big scholars read Prabhupada's books and think this is really wonderful. और बड़े बड़े स्कॉलर पंडित They हैं don't think, वो oh, this is for children. और बड़े बड़े स्कॉलर पढ़ते हैं प्रभुपाद की बुक्स और वो भी ऐसा नहीं सोचते कि बच्चों की किताब है. तो Children that are devotional, they don't think this is too hard. और जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं सोचते कि मेरे लिए बहुत कठिन है. Someone who's not devotional, they think, yeah, this is too hard. जिसमें भक्ति नहीं है वो सोचता है बहुत कठिन है. Because there's too much Krishna, they don't like that. So, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों में बहुत ज्यादा कृष्ण है और अभक्तों को अच्छा नहीं लगता कृष्ण सुनना. so it's quite amazing. And then the stories are wonderful. तो बहुत अद्भुत लीलाएं हैं प्रसंग है भागवतम में. The personalities, the philosophy, everything is, so much is there. सिद्धांत इतना अद्भुत है, बड़े बड़े महाजनों के बारे में दिया है इतना अद्भुत है, सब कुछ इतना अच्छा है भागवतम में. So it's understood by mercy, that's all. तो भागवतम कृपा से समझ आती है. It's not understood by scholarship. पांडित्य से समझ नहीं आती भागवतम. I was trying to find that sloka where, when Sridhar Swami first commentated on the Bhagavatam, there was some question whether it's bona fide or not. तो मैं कुछ श्लोक ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि जब श्रीधर स्वामी ने सबसे पहले टीका लिखी तो उसमें कुछ प्रश्न था. So they put his commentary to Shiva. तो एक प्रश्न चिन्ह आ गया लोगों के मन में कि श्रीधर स्वामी की जो टीका है वो सही है या नहीं है, प्रामाणिक है नहीं. तो उन्होंने शिव जी के Somehow सामने they got this first that, Sukadev may know, I may know, Vyasadeva might know or he might not know. और जैसे ही शिव जी के सामने रखी तो ये श्लोक आ गया कि सुखदेव Sukaveti Vyasaveti Yoveti Sukaveti Vyasaveti Naveti Va. Right? So it's quite interesting. But if you want to read it again, or you want to by preaching it, you can get it more of a taste. Whatever you know, you teach somebody. तो भागवतम को पढ़ें और जो भी आपने पढ़ा है वो दूसरे को बताएं, उसको प्रचार करें, शिक्षा दें, तो उससे आपके लिए और रसमय हो जाएगा. Teach somebody, किसी न किसी को बताएं जो भी आपने पढ़ा है. Okay, satisfied? Maharaj, can I ask one more question? और कोई प्रश्न पूछना चाहिए? एक, दो. Hare Krishna Maharaji. Here it is.
Hare Krishna. Aham vedmi 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕 𝒍𝒍𝒃𝒂𝒚𝒔 veti va bhaktya bhagavatam grayam nabudaya nabujana cha tikaya. Lord Shiva said, I may know, Sukadeva Goswami, the son of 𝑣𝒍𝒃, may know, and 𝑣𝒍𝒃 may know or may not know Srimad Bhagavatam. On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods, or imaginary commentaries. Puja by so-called intelligence, Tikaya by imaginary commentary. There's many imaginary commentary. तो जब श्रीधर स्वामी की टीका शिव जी के सामने रखी गई तो एकदम से भागवतम का ये श्लोक खुल गया जिसमें शिव जी कह रहे हैं कि मैं जानूं या ना, मैं जान पाऊं या ना जान पाऊं, सुखदेव गोस्वामी जान पाए ना जान पाए, व्यासदेव जान पाए ना जान पाए, परंतु भागवतम केवल भक्ति भाव से ही समझा जा सकता है, पांडित्य से और स्कॉलरशिप से, अपनी मनोकल्पनिक टीकाओं से नहीं समझा जा सकता, यानी भागवतम केवल भक्ति से समझ सकते हैं. So Dhruva, somehow or other, he just, although he never probably heard of Narada Muni before, he took complete faith in Narada Muni's instruction. तो विशेषता यह थी कि ध्रुव महाराज हालांकि कभी उन्होंने नारद मुनि के बारे में पहले सुना नहीं था, परंतु जब नारद मुनि सामने आए तो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी प्रकार वो पूर्ण श्रद्धा या विश्वास किए नारद मुनि के ऊपर. He was in the forest, so there was no murti wala, so he made a murti from mud. और ध्रुव तो वन में रहते थे, उनको तो मूर्ति वाला भी कोई नहीं मिला, तो खुद ही उन्होंने वहां पे मूर्ति बना ली. And he chanted that Om Namo Bhagavate Vasudevaya. और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया. That he forgot, his original reason. He forgot, about the wanting a big kingdom and everything. और फिर जो उनकी मूल इच्छा थी, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, भूल ही गए वो. He got totally absorbed in the sadhana. तो साधना में इतना वो रम गए कि अपनी भौतिक इच्छा को भूल गए. So we can pray that we should get such faith. तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को कि हमारी unbelievable. All right. तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसे श्रद्धा हो भागवतम में. We have about 2 minutes or something here. No, 1 minute. Anyone? Quick. हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर लेक्चर. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन बुक डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है. ऐसे कई डिवोटीज के पास भगवद गीता होती है तो हम उन्हें कृष्णा बुक दे देते हैं, लेकिन हमें कृष्णा बुक के अंदर गोपी भाव के चैप्टर्स पढ़ने के लिए मना किया जाता है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, और वो जो डिवोटी होते हैं वो भी जुड़े नहीं होते ISKCON से, तो क्या उन्हें हमें वो चैप्टर्स पढ़ने के लिए मना करना चाहिए कि कुछ उसके बारे में पूछना था. उसमें जो गोपी भाव के चैप्टर्स हैं वो उनकी कॉन्शियसनेस प्योर नहीं है, तो उनको फिर कुछ मना करना है पढ़ने के लिए कि वो पढ़ सकते हैं वो. Maharaj, question is that in the service of book distribution, we distribute Krishna book to newcomers and people who may not have faith also. And Krishna book also contains chapters on gopis and the pastimes of gopis with Krishna. So should we ask these people not to read these chapters? No. Because it's presented by Srila Prabhupada with full realization of the first 9 cantos. बिल्कुल ऐसा नहीं है So anyone can read it. क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब प्रकट किया है कृष्णा बुक को तो पूरे साक्षात्कार के साथ किया है, तो हर कोई पढ़ सकता है. And if you told someone don't read it, they were first thing they do. और यदि किसी को बोलेंगे ये मत पढ़ना तो सबसे पहले वही पढ़ेंगे वो. Just read wherever you like. जो भी अच्छा लगता है पढ़िए प्रभुपाद की किताब में. Although, reading it from beginning to end is very good. Reading it from beginning to end is very good,
तो जो भी अच्छा लगे पढ़िए, परंतु सबसे अच्छा है कि आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः पढ़ें। But I tell people, like, look at all the pictures, see what you like, and then read that section, परंतु मैं लोगों को बोलता हूँ कि कृष्णा बुक में सबसे पहले जो चित्र हैं वो देखिए, और जो चित्र अच्छा लगता है सबसे पहले वो प्रसंग पढ़ लीजिए। Prabhupada put all the pictures for a purpose. तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों से ही चित्रों को प्रकट किया है। I see the new Indian BBT English version has so many pictures. तो मैं जो भारत का बीबीटी का नया वर्जन है कृष्णा बुक का, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं। The original version designed by Prabhupada was 2 volumes. तो जो मूल कृष्णा बुक है जो प्रभुपाद जी ने छपाई थी, उसमें 2 भाग थे। First volume had 64 pictures. तो पहले भाग में 64 The पिक्चर्स थी, second volume had 36 pictures. और दूसरे में 36 पिक्चर्स थी। One for every, at least one, sometimes 2 for every chapter. तो लगभग एक अध्याय की एक पिक्चर थी। Prabhupada wanted that. प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा। And then, underneath the picture it told a little bit and it told the page number. So, a lot of people would do that. We sold them just by showing the picture. और हर पिक्चर के नीचे 1-2 पंक्तियों में उस लीला के बारे में बताया जाता था, और फिर पेज नंबर है कहाँ पढ़ सकते हैं। तो हमने ग्रंथ का वितरण किया बस ये पिक्चर दिखा के लोगों को। When we first got that book, we hadn't even read it. जब हमें पहली बार कृष्णा बुक मिली तो हमने पढ़ी भी नहीं थी स्वयं। And I remember just showing the pictures and saying, these are windows to the spiritual world. And people were just fascinated. They'd say, how much? मुझे याद है जब मैं ग्रंथ का वितरण शुरू में करता था तो मैं लोगों को ये चित्र दिखाता था और बोलता था ये आध्यात्मिक जगत का दरवाजा है, और लोग बहुत खुश होते थे देखकर। It was a really big book, और पहले बड़ी पुस्तक थी कृष्णा बुक। In inches, it was 10 by 12. 10 by 12 के साइज की थी वो। That's a big size book. It's an A4, I guess. A4 साइज की बुक थी। I don't know exactly, but very big. Big print. Prabhupada chose especially big print. और उसका प्रिंट भी बड़ा था, फॉन्ट साइज बड़ा था। So big font, so it was very easy to read. तो फिर पढ़ना भी बहुत आसान था। And then all the pictures. और फिर इतने सारे चित्र थे। And the artist, Prabhupada would just write out the Leela, and no one ever heard of it before, and say, can you paint this? और जो आर्टिस्ट थे उनको तो कुछ भी नहीं पता था ये सब क्या होता है, और प्रभुपाद जी में तात्पर्य देते थे और कहते थे ऐसा चित्र बनाओ पढ़ के। And they would read it and then ask so many questions. और फिर वो पढ़ते थे और प्रभुपाद जी से कई प्रश्न पूछते थे। Because they never heard of demigods or demons or anything. उनको पहले तो कुछ नहीं पता था देवता कौन होते हैं, असुर कौन होते हैं। So Prabhupada told exactly, how to paint everything. तो फिर प्रभुपाद जी ने ये सब बताया उनको। And they said, but we don't know, and we're not even good artists. We're new, young. तो जो अच्छा चित्रकार नहीं है उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं होगा। Prabhupada said, just chant Hare Krishna while you're painting. प्रभुपाद जी ने बोला बस जब आप चित्र बनाते हो तो साथ में हरे कृष्ण बोलते जाओ, And everything will be all right. और सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। So they did that. They had faith. They were like Dhruva. They had complete faith in Prabhupada. और वो जो प्रभुपाद के शिष्य हैं उनको ध्रुव की तरह अपने गुरु यानी प्रभुपाद की वाणी में पूर्ण विश्वास था, उन्होंने ऐसे ही किया। चित्र बनाते समय हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। So we got all these incredible paintings. और इस तरह से इतनी अद्भुत चित्र प्रकट हो गए। And some of them, they look a little, like not technically perfect. और कुछ चित्र लगता है कि टेक्निकली उतने सही नहीं भी हैं, Prabhupada loved them. परंतु प्रभुपाद जी को बहुत अच्छे लगे। And now I see the BBT starting to publish them again. At one point they started thinking, well, these are not perfect, we need new paintings that look like photographs. So Prabhupada liked the old one. तो एक समय ऐसा है कि बीबीटी को लगा कि ये पिक्चर्स तो टेक्निकली सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए, कम करना चाहिए, परंतु प्रभुपाद जी को अच्छे लगते थे। और अब देख रहे हैं कि बीबीटी की पुस्तकों में और पिक्चर्स फिर पहले की तरह आ रही हैं। Because they were full of bhakti. क्योंकि वो जो चित्र बनाए गए थे वो भक्ति से पूर्ण थे।
And that's, that's what we want. Okay? And then gradually the artist became very super. Now everywhere you look in India, Vrindavan, everybody's got prints of ISKCON paintings. तो ये चित्रकारों ने, ये जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, इन्होंने प्रभुपाद की कृपा से भक्ति भाव से चित्र बनाए, इतने अद्भुत चित्र कि आज आप कहीं पे भी जाएंगे तो ISKCON के ही चित्र बाकी जगह भी मिलते हैं. People put them in Bali, the Hindu magazine, they use our paintings all the time. तो कोई हिंदू मैगजीन हो, कोई भी Even हो, though they criticize ISKCON, they put the paintings all the time in their magazine. तो ऐसी पुस्तकें होंगी ISKCON के बारे, ISKCON का खंडन करेंगे, परंतु चित्र ISKCON के ही लगाते हैं. People think like in Indonesia is a Muslim country. तो जैसे इंडोनेशिया एक मुसलमान देश है, The Muslims never give any trouble. They're nice. परंतु वो मुस्लिम देश है, परंतु वहाँ पर तो बहुत अच्छे हैं, वो कोई समस्या नहीं करते हमारे लिए. And they're the majority. They're not afraid of the little Hare. They're not afraid of Hare Krishna. और वैसे भी वो उनकी संख्या बड़ी है तो वो हमसे डरते भी नहीं हैं. They're the government and the majority, but the Hindus give us a hard time. परंतु समस्या आती है हमें हिंदुओं से. Same way they gave Lord Chaitanya a hard time. जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए भी हिंदुओं ने अधिक समस्या बनाई. Prabhupada says it over and over again. प्रभुपाद जी कहते हैं बार बार ऐसा ही होता है. We had a good business and this Nimai is making trouble. We have good business and Nimai is ruining our business. तो हिंदू लोग ये सोचते हैं कि हिंदू पंडित ये सोचते हैं हमारा व्यापार तो अच्छा चल रहा है और निमाई आ रहा है, उसने हमारा बिजनेस बिगाड़ दिया. Because they have business, yajna, funerals, weddings, births, everything, marriage, everything. They have you have to have this yajna and only Brahman can do it, and you have to pay so much money or your husband will go to hell. And Lord Chaitanya said you don't have to do anything like this. क्योंकि इन ब्राह्मणों ने एक व्यापार So we बना get लिया था. trouble from Hindus all over the world like that, from the Brahmin priests. तो जो ब्राह्मण पंडित हैं उन्होंने व्यापार बना लिया था कि यज्ञ करेंगे, कभी विवाह यज्ञ है, कभी जन्म यज्ञ है, कभी अंतिम संस्कार है, इतना धन दो वरना तुम नष्ट हो जाओगे, पाप हो जाएगा. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, It's not Hinduism, और निमाई ने कहा इस सब की कुछ आवश्यकता नहीं, बस भगवान की शरण लो. तो पूरे विश्व में ऐसे ही है कि थोड़ा हिंदुओं से अधिक समस्या आती है. And we're not Hindus. और हम हिंदू नहीं हैं. Whatever Hindu is, nobody knows. जो भी हिंदू है हमें नहीं पता हिंदू क्या है. I was in Fiji where there's a lot of Hindus. फिजी में थे हम जहाँ पे बहुत सारे हिंदू हैं. And I was going door to door for book distribution. और मैं घर घर जा रहा था ग्रंथों के वितरण के लिए. So one house is, oh yes, we're also Hindus, please come in. तो एक ने दरवाजा खोला, ओ हम भी हिंदू हैं, कृपया करके अंदर आइए. And they're very, very happy and nice. और बहुत प्रसन्न थे. The next house said, we're Hindus, we don't want anything to do with Hare Krishna, get out of it. और अगला घर था, उसने बोला हम हिंदू हैं, हमें कुछ हरे कृष्णा से नहीं करना, बाहर निकल जाओ यहाँ से. So what are Hindus? वो भी हिंदू थे. Nobody knows. तो कौन है हिंदू, किसी को नहीं पता. जिसने स्वागत किया, जिसने बाहर निकाल दिया. We're Vaishnavas. हम सब वैष्णव हैं. So we do things that bona fide Hindus do, many, but तो हम वो करते हैं जो कि प्रामाणिक कार्य हैं भक्ति के, वो ही So करते हैं. Dhruva Maharaj ki jai, जय Srimad Bhagavatam ki jai. जय. And remember that it's not understood by scholarship. तो इस बात को सदैव स्मरण रखें कि ज्ञान से नहीं समझ पाएंगे भागवतम को. Only through devotional service, केवल भक्ति से समझ पाएंगे. not by material intelligence or speculation or imaginary commentary. भौतिक बुद्धि से, मनोकल्पना से, अपनी टीका देने से नहीं होगा. And that's what Lord Chaitanya told Devananda, it's only about bhakti, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने nothing else. देवन पंडित को बोला कि भागवतम केवल भक्ति, भागवतम में केवल भक्ति के बारे में है और कुछ There नहीं. may be other stories that don't look like it's bhakti, but it is. और लीलाएं भी हो सकती हैं भागवतम में, लगती नहीं भक्ति पर हैं भक्ति से Aiming, संबंधित. it will bring you to bhakti. परंतु वो सब भक्ति की ओर इशारा करती Because हैं, it's all connected to Krishna. क्योंकि सब कुछ कृष्ण से संबंधित है भागवतम में. Like the 9th canto with all these dynasties leading up to Krishna's birth. तो नवा सिकंद पढ़ेंगे All these उसमें people are Krishna's ancestors.
उस बड़े बड़े डायनेस्टीज के बारे में चर्चा आ रही है, परंतु सब जाके कृष्ण के आविर्भाव के बारे में पहुंच रहे Okay, हैं। Srimad Bhagavatam ki jai. जय Srimad Prabhupada ki जय jai. Gaur Premanand. हरि 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 बोल। His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ji ki, Srila Prabhupada ki, Samved Gaur Bhakta Vrinda ki. So we are extremely blessed and extremely thankful, extremely grateful to Maharaj for having come here and blessed us with this wonderful divine darshan, association, katha and shiksha. And I'm sure all of us carry these learnings eternally with us and try to imbibe the mood that Maharaj has had for Prabhupada in our bhakti. So हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज श्री के कि महाराज मायापुर से अभी सीधा आए हैं महाराज, और किस तरह पूर्ण रूपेण श्रील प्रभुपाद को समर्पित हैं और उनके हृदय में भक्ति है। तो महाराज ने बहुत सुंदर अपना दर्शन, शिक्षा, प्रवचन, कथा ये सब किया। तो और अवश्य जो भी हमने सुना है वो शाश्वत रूप से हमारे पास वो चीज़ है अभी महाराज की कृपा से, और हम प्रयास करें कि जो महाराज का मूड है प्रभुपाद को शरणागति का, वही हम लोग भी अपने गुरु के प्रति ला सकें। So let us all thank you Maharaj with a warm heart and loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो महाराज अभी वृंदावन जा रहे हैं, and we would like to beg Maharaj and humbly submit at his lotus feet that whenever he comes to India and Delhi, so we'll be very, very fortunate to get the association of Maharaj over and over again. Like Sri Chaitanya Mahaprabhu with Gadadhar Pandit was always, Maharaj said, reading Dhruv's episode over and over again. So we would be very blessed if we can also get the association of Maharaj over and over again. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ji ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samved Gaur Bhakta Vrind ki jai, Nitai Gaur Premanande। और आप सब भक्तों का धन्यवाद आज सुबह कथा में आने के लिए और इतना अद्भुत लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आकर। और जितनी भी मात्रा में प्रसाद है आप सब प्लीज़ प्रसाद लेकर जाइएगा, गीता होने से प्रसाद लेकर जाइएगा। और 4 तारीख से गौर कथा आरंभ हो रही है। आप सब जानते हैं 7 तारीख को है गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। तो 4 तारीख से कथा आरंभ हो रही है। 4, 5, 6, 7 शाम को हिज होलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के द्वारा कथा रहेगी, और 5, 6, 7 सुबह के समय भी कथा रहेगी हिज होलनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज के द्वारा। तो आपकी 3.5 दिन की छुट्टी है भौतिक कार्यकलापों से, सुबह शाम दोनों यहाँ पर आइए और पूर्ण रूपेण कथा के अंदर इमर्स हो जाइए, एब्जॉर्ब हो जाइए। गौरांग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Going down really fast. You don't have to. You can say everybody should pray for him. He's got many people visiting.